I was today years old. Today years old इसका मतलब है मुझे तो आज ही पता चला। मिसाल से समझते हैं, I was today years old when I found out that pineapple don't grow on trees. मुझे तो आज ही पता चला कि पाइनएप्पल दरख्तों पर नहीं उगते। What's in it for me? 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 इसका मतलब है इससे मुझे क्या फायदा होगा। For example, if I invest in this business, what's in it for me? इसका मतलब है अगर मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। One thing I always procrastinate on. I procrastinate a lot. All right, I'm procrastinating clearly. We keep procrastinating. Don't teach me to procrastinate. Procrastinate इसका मतलब है काम को बिला वजह टालना या सुस्ती करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। For example, I procrastinate a lot when it comes to studying. यानी कि स्टडी के मामले में मैं बहुत ही ज्यादा सुस्ती करता हूँ, काम को टालता हूँ। He's so amiable. Edward is very amiable. Amiable. Amiable का मतलब है खुश अखलाक या दोस्ताना। मिसाल से समझते हैं। For example, everyone in the office likes the manager because he's so amiable. Wake up and smell the coffee. 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 हकीकत को पहचानो। मिसाल से समझते हैं। You think you can pass the final exam without studying at all? Wake up and smell the coffee. You need to start working hard today.